Start with the numerical of this chapter, recording of transactions. So here we have to make the journal. See, journalize the transactions. Here we have to make journal entries in the books of Saroj Mart, and transactions are taken place in the month of April 2017. So let's see how we are gonna make this. Books of, so this is the like format of journal entry. We will write here books of Suraj Mart. I thought it's Saroj, no, it's Suraj Mart. Okay, and then journal. So this is the structure of journal. First column will be the date, then particulars, then laser folio. While we are making journal, we put here laser folio, and while we are making laser, we put there journal folio. So these are the page number, so that we can like coordinate with each. This is the debit amount and then credit amount, and the particulars we will write all the accounts which is debited and credited. So firstly, date April 1 2017, it's already taken here. So now we can change, I think, not the format or not. Yeah, we can change it. Let's change the date format actually. Liking this format, yeah. So this is better. 1 April. Business is started with cash 1,50,000. So cash is coming in. Cash is real account. Debit what comes in. So here we will write cash account. Cash account debit, and then to capital account, because capital is coming in the form of cash. So cash account debit to capital account, 1,50,000. Done. Here also we will write 1,50,000. Done. And here we have to write narration, like what action has been done. So being cash, being business started with cash. Being business started with cash. Narration is very easy, no need to like worry what we have to write. What is the sentence given here? You can mention it here just by writing being business started with cash. Oh yeah, nothing much more here. One second, here we have to like draw one line when we are completing this sentence, and when we are completing this any column. It's not, no, it's not coming. Okay, it's okay. Let me do what we're doing. Leave this. Here we have to actually draw one line and then start with the next transaction recording. It's okay. You guys will do it in your like notebook wherever you are writing. It was not possible for me here. However, I can do it, but I need like that column. It's okay. Now goods purchased from Manisha. So goods are coming in. So here we'll write goods account. It's debited. Goods are coming in. Real account. Goods will come under real account. It's assets. Debit what comes in. So goods account debit to, here we will write Manisha. We don't know whether it is cash or like credit.
see here how it's written, है ना, goods purchased on credit, because we are not sure that it is being paid in cash or not, because it's not clearly mentioned that it is given for cash. So we will assume that it is done on credit basis. ठीक है. Goods account debit to Manisha account 36,000, है ना. Yeah, this is done. Here we can write the narration, being goods purchased from Manisha. I'm mentioning the narration here because we are doing it for the first time, but going forward, I don't think I need to mention the narration, as you guys all will know that what needs to be mentioned. It's the same line, you can mention it here. So I will just skip this narration part. Going forward, I will just write the which account is debited and which account is credited, so that it is very clear to you guys how we are analyzing which account will be debit and then which account will be credited, है ना. Stationery purchased for cash 2,200. So stationery is purchased. This is also the real account, stationery. So it is coming in debit. What comes in stationery. और cash account भी real account है, and cash account is going out. Debit what credit what goes out, है ना. ये है ना इसका real account का. Debit what comes in and credit what goes out. So to cash account, है ना. I will mention to cash account. कितना है 2,000 ना 2,200. Same 2,200 here also. ठीक है. Now open a bank account with SBI for 35,000. Open a bank account with SBI. SBI account open होगा और कैश हमारा जाएगा, तो हम यहाँ पर SBI account. Here it's not mentioned that it's done on check, so we will assume that it's done in let's see what it says, bank account. So we will assume that it's done on cash, है ना. यहाँ पर हम लोग ऐसा assume करेंगे क्योंकि हम लोग पैसा ही दे रहे हैं ना. See, if check would have had given here, then check should be mentioned clearly, है ना, कि check दे रहे हैं कि क्या, cash दे रहे हैं कि क्या दे रहे हैं. It's not mentioned, then by default it is the cash for this only. But see, in the second line where goods were purchased from Manisha, it should be mentioned that it is on the cash. If it's not mentioned cash, then we will assume that it's on the credit. ठीक है. यहाँ पर विथ कैश नहीं लिखा है ना. सी, पहले में लिखा इन फर्स्ट लाइन विथ कैश, थर्ड में भी लिखा फॉर कैश, पर सेकंड में नहीं लिखा कैश. सो विल अज्यूम इट इज़ ऑन क्रेडिट. और यहाँ पर वी विल अज्यूम दैट इट इज़ ऑन SBI अकाउंट में पैसे दिए गए हैं कैश में. सो SBI अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है. एंड यू कैन मेंशन द अमाउंट whatever it is. Okay, I will mention it here, 35,000. The next is narration also you can write it here, being a SBI account opened ऐसे करके. So here the next is goods sold to Priya for 16,000. Goods are sold to Priya for 16,000. Goods जा रहा है, so it will come in credit. And Priya को, तो Priya is receiving the goods, debit the receiver, Priya account debit to goods account.
ठीक है, and the amount can mention here 16,000. ठीक है, ऐसे. Now the next is received a check of 16,000 from Priya. Priya is giving. Priya is the personal account, so debit the recipient, credit the giver. Giver है Priya. Check आ रहा है, right? Check आता है तो what we have to write? Check आ रहा है तो we will not mention check, we will mention bank. ठीक है. Okay, see one more thing. यहाँ हम लोगों ने लिखा था ना SBI account. We will mention bank account here. Bank to cash. ठीक है. I can change this also. Not SBI. We will mention here bank directly. Here also we will mention bank wherever there is so account वगैरह या check. We will mention bank. ये हम लोग देख रहे थे ना, ये received a check of 16,000 from Priya. अगर कहीं पर भी check word use हो रहा है we will write bank. चलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया अकाउंट है ना 16,000. फिर है गुड्स सोल्ड टू निधि. हम यहाँ पर लेंगे गुड्स सोल्ड टू निधि हो गया हमारा. तो हमें क्या हो रहा है, गुड्स आर गोइंग आउट एंड निधि को जा रहा है डेबिट द रिसीवर. निधि इज द पर्सनल अकाउंट, गुड्स इज रियल अकाउंट. निधि अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट है ना 14,000. नेक्स्ट है 8 तारीख का. निधि pays 14,000 cash. Nidhi is paying. Cash is coming in to the bank. निधि पे कर रही है कैश, बट कैश तो आ रहा है ना. वी आर रिसीविंग कैश. सो कैश अकाउंट ऊपर होगा. इट्स नॉट कैश जा रहा है, वो निधि के अकाउंट से जा रहा है. इन हर बुक्स इट विल बी इन द क्रेडिट, बट इन आवर बुक्स इट विल बी इन द डेबिट, बिकॉज हमें तो कैश मिल रहा है निधि के थ्रू है ना. वी आर रिसीविंग. निधि इज पेइंग बट वी आर रिसीविंग. सो निधि अकाउंट $14,000. There's one extra zero. Purchase goods for 20,000 on credit from Ritu. यहाँ हम क्रेडिट पे खरीद रहे हैं. क्या खरीद रहे हैं? गुड्स. So goods are coming in. Here we will not write cash. What we will write? The person name, because we are buying from credit है ना. Goods in Ritu. Goods account debit to Ritu account. If there is any confusion in any journal entry, you can ask it in the comment section.
I will reply to your comment that how this entry has been taken place, or which account is being affected and why it is being affected. Okay, so this तारीख का हो गया. Purchase goods for 20,000 on credit from Ritu. Okay, this is done. 20,000 का goods we already have done, है ना. We need more. इसको बड़ा कर लेते हैं. देखो ये अच्छे से हो गया. यहाँ पर अच्छा है, खुद ही लाइन आ गया. 14/4/2017 क्या है फिर यहाँ पर. इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000. इंश्योरेंस टू बैंक, है ना. वी हैव लर्न्ड ना कि अगर कहीं पर भी चेक है तो what we will use the bank word. Debit to बैंक अकाउंट. कितना का है. इंश्योरेंस पेड बाय चेक 6,000. यहाँ पर भी 6,000. ठीक है. 18/4/2017 को है. पेड रेंट 2,000. हम यहाँ पर भी एज्यूम करेंगे कि ये रेंट जो है it's not given in cash because it's not mentioned it's given in cash. So what we will write, rent account debit to, since it's not in cash it's in credit, and to whom नहीं पेड रेंट है ना, तो ऑफ कोर्स हमने कैसे पे किया होगा. चलो we will see. कैश में ही दिया है ना. सी रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 2,000. यहाँ भले मेंशन नहीं किया है कैश में, बट यहाँ ये भी तो नहीं बोला चेक वेक से दिए है ना. क्रेडिट में रेंट कैसे देंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. सो ऑब्वियसली it's in cash. So here we will write rent to cash account. फिर क्या है. goods costing 1,500 given as charity. तो charity comes in and goods जाएगा. सी कैसे हो रहा है. charity to goods given as charity. अगर goods given है charity को तो we will like mention purchase account. ठीक है. ये देखो हमने ना यहाँ पर भी गलती करी. यहाँ पर भी हमने goods लिखा था. यहाँ क्या होना चाहिए था. purchases होना चाहिए था. चलो करेक्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना. goods sold था. हमने यहाँ पर भी goods ही मेंशन करा था. हमें क्या मेंशन करना चाहिए था. सेल्स मेंशन करना चाहिए था. यहाँ पर भी परचेज है तो व्हाट वी हैव टू मेंशन है परचेज करना था. चलो कैन वी करेक्ट इट फटाफट. देखो ऐसे क्या होता है ना, अभी ना याद रहेगा कि हमने कहाँ गलती करी है ना. याद रहेगा, बहुत अच्छे से रहेगा, है ना. गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मनीषा था ना, यहाँ होगा परचेज. ठीक है. अगर मान लो हमने यहाँ गलती नहीं की होती, डायरेक्टली वैसा किया होता तो क्या होता. हमें ये याद नहीं रहता. अभी ऐसा किया है तो अभी हमें बहुत अच्छे से याद रहेगा. गुड्स सोल्ड टू प्रिया था तो यहाँ होगा सेल्स.
गुड्स अकाउंट नहीं होता, सेल्स या परचेस अकाउंट होता है। चलो डन, यहाँ पर भी है ना। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। या ठीक है, ये देख लो, प्रिया टू सेल्स हो गया, निधि टू सेल्स हो गया, है ना। प्रिया टू सेल्स, निधि टू सेल्स, कैश टू निधि। यहाँ पर ये करना है करेक्ट। परचेस टू रितु, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक, ये सब ज़्यादा नहीं बचा, विल डू इट फटाफट। यहाँ पर क्या दिया था हमने, इंश्योरेंस पेड ना, तो इंश्योरेंस में यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम वी कैन ऐड ऐसे, क्योंकि प्रीमियम ही देते हैं ना इंश्योरेंस का। चलो ये सही हो गया। अभी हम कहाँ थे, 20 तारीख में। गुड्स कॉस्टिंग कितना गिवन एज चैरिटी, चलो फटाफट करते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट, तो हमारा यहाँ गुड्स जा रहा है ना, पर वे ना मेन सेल्स, तो ये हमारा परचेजेस अकाउंट इफेक्ट होता है। चैरिटी अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट, ये हो गया हमारा कितना का है, 1500। लेट्स सी, 1500। चलो ये देखा हमने 1500 का परचेज टू चैरिटी, ठीक है। अभी कितना बचा, अभी ये है। नाउ दिस इज डन, चैरिटी वाला। परचेज ऑफिस फर्नीचर, इतना का, तो फर्नीचर आएगा, बट ये हमारा फिर से कैश तो नहीं लग रहा है, बट है ये कैश। फर्नीचर टू कैश, परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सी वेयर देर इज द नेम गिवन, जैसे हम यहाँ पर लिखा था ना, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मनीषा, तो ऐसे अगर नाम कहीं पर भी है किसी का, देन ओनली वी विल अज्यूम दैट इट इज़ ऑन क्रेडिट, अदरवाइज इट इज़ ऑन कैश, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पेड रेंट लिखा है, कुछ नहीं है, लेकिन नाम भी तो नहीं है ना, कुछ भी ये सब भी तो नहीं है, सो वी विल अज्यूम इट्स ऑन कैश। जैसे यहाँ पर हो गया परचेज ऑफिस फर्नीचर, किसी पर्सन का नाम नहीं है ना, अनटिल एंड अनलेस देयर इज एनी पर्सन's नेम, सो वी विल अज्यूम इट इज़ ऑन कैश। या गुड टू गो। कितने का फर्नीचर खरीदा हमने, 11,200। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फॉर हाउस होल्ड पर्पसेस, सो दिस मीन्स ड्राइंग्स, है ना, कैश जा रहा है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये 29 का ट्रांजेक्शन। और ये कितना है, ड्राइंग्स 5,000। See guys, you need to mention addition also in exam, otherwise what will happen is the teacher will deduct your marks. Some marks it will be deducted if you do not find narration, but I am not mentioning it here, just the narration is same, that's why the sentence is only the narration and you again have to write it here, just that, that's why. Otherwise you need to mention the narration
otherwise some marks will be deducted. If you want to save your marks, then write interest received cash 1200. Interest received, it's coming in, it's income. वो ये nominal account है ना, debit all the expenses and losses and credit all the incomes and gains. Interest received in the form of cash, so cash is coming in. तो interest received account कितना का 1200. Cash sales. So here cash is coming in when we are making sales. To sales account, ठीक है, 2300. फिर कमीशन पेड 3000 बाई चेक. तो हम यहाँ लिखेंगे कमीशन, ये हमारा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है. कमीशन पेड on the commission account. Debit check है ना, so what we will mention, direct bank account 3000. फिर telephone bill paid by check, again telephone bill to bank account. Telephone bill is nominal account and to bank because it's on credit, no it's on check, so yeah, to bank account. ये हो गया हमारा 3000 है ना, 2000. ठीक है, अभी हमारा लास्ट है 34, ये 2017 पेमेंट ऑफ सैलरीज एंड कैश. फिर से हमारा हो जाएगा सैलरीज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट. ठीक है, इजी था ना. हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी. कहाँ की थी? वहाँ की थी जहाँ पर परचेजेस और सेल्स लिखा था गुड्स के जगह पे, है ना. ठीक है, बट उससे समझ में आया हमें इस लाइक ओवरऑल इस इलस्ट्रेशन को बना के, इस न्यूमेरिकल को बना के कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है जो हमने कहीं कहीं गलती कर दी थी, बट हमने फिर करेक्ट करा बाद में. तो वो कुछ चीज़ें क्या थी? वो कुछ चीज़ें ये थी कि सबसे पहला तो ये कि जहाँ भी गुड्स परचेज या गुड्स सेल सोल्ड है ऐसा है, तो वहाँ हम परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट का यूज़ करेंगे, है ना. या फिर गुड्स कहीं पर भी जा रहा है तो वो सब उसमें से ही जा रहा है, परचेज अकाउंट ही हमारा क्रेडिट हो गया. देखो जैसे चैरिटी का था, चैरिटी अकाउंट टू परचेज अकाउंट, यहाँ पर गुड्स गया था तो वो परचेज वाला ही अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा. ये एक हमने देखा, है ना. एक सबसे ये भी एक है इम्पॉर्टेंट कि हमने चैरिटी टू परचेजेस करा है यहाँ पर, अगर चैरिटी से चैरिटी दे रहे हैं गुड्स तो. और दूसरा हमने यहाँ पर क्या देखा कि अगर कहीं पर भी नाम मेंशन है, wherever there is the name mentioned like Manisha or any name, तो there it's not in the form of cash until unless it's written cash. अगर कहीं पर भी नाम है, wherever there is the name, so it is
done in credit. Otherwise, so we'll mention the person's name, otherwise it's on cash everything. ये दो चीज़ हम लोगों ने देखा है, चैरिटी टू परचेज अकाउंट ये सारे, और दूसरा कि कहाँ पर क्रेडिट होता है, जहाँ पर भी किसी पर्सन का नाम है तो। ठीक है, बाकी सारी तो इजी थी, है ना। चलो, आई थिंक we have learnt a lot while solving this journal, and I hope we are not gonna make the same mistake in the next journal. Chalo, see you guys in the next numerical of recording of transactions. Thank you, bye bye.